बिन जोसेफ और आप सब कुछ ठीक होंगे। और मैं अभी बताने वाला क्या मतलब, ये थोड़ा वीडियो शॉर्ट पे नहीं है, थोड़ा लॉन्ग पे है, तो अभी बता रहा हूँ, स्किप ना को करो और यहाँ के वहाँ का नज़ारा देख लो यार, सब लोग फिदा हो जाएंगे। वहाँ का वो प्लेस का नाम है अलपी है। आपको ये मालूम होगा, अलपी सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। और वहाँ का बोट और वहाँ का सब कुछ बोल रहा हूँ ना, आप जाके विजिट कर लो और आपको मालूम पड़ेगा। और आपको ये कांटेक्ट नंबर पूरा बुकिंग पूरा, और मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पे पॉज करके देख लो, नंबर देख लो, कांटेक्ट करना बोला तो उन लोग कांटेक्ट कर लो, उन लोग को पूरा लैंग्वेजेस पूरे आता, और विजिट कर लो, समझ में आ जाएगा आपका वो। आता मातक सटकली। तो ये है आलापुरा, अभी स्ट्रेट जैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बोर्ड सब कुछ है, तो उसमें से बोर्ड का नाम है वेका, बहुत बड़ा है। देखने में टाइटैनिक है मगर टाइटैनिक नहीं होता ये। बहुत बड़ा है। यहाँ के ड्राइवर यहाँ पर है, तो यहाँ का ये स्टीयरिंग व्हील है और ये पावर बनाने वाला आगे और फ्रंट और बैक रिवर्स का है, और साथ साथ ये इमरजेंसी का बटन, ठीक है। ये नेविगेटर है, तो हम लोग किधर किधर जा रहा था, हम लोग इसमें से दिख जाता, तो क्या तो भी लाइक नीचे, क्या तो भी लाइक यहाँ पर क्रॉस दिख रहा होगा, सो नीचे एक पत्थर है, तो वहाँ का ये बताएगा एक एक चीज़। तो ये नेविगेटर GPS 650F GPS है ये। तो फर्स्ट एड हमेशा की तरह किधर भी गया तो भी फर्स्ट एड किट रहना ही चाहिए। तो वो एक माइक है, माइक्रो बॉक्स, तो यहाँ के लाइक बॉक्स दिख रहा होगा पूरा बताना वाला किधर किधर के। ये रहा दोनों ही कपल्स। is a very famous lake, situated in the city. Very famous for the Nehru Trophy boat race held every second Saturday of August. If you visit in every second Saturday of August, you can see the Saik boat race. After all, we will reach one of the biggest lake in Kerala, and the longest one in India is known as Vamanadu Lake. It is known as Kumarakom. After all, we will reach the rice bowl of Kerala, is known as Kuttanadu. Whenever traveling through the Kuttanadu, we can see that paddy cultivation area, village lifestyle of villagers, and the main attraction of the Kuttanadu is one of the few regions in the world the paddy cultivation is doing below the sea level. That's the main attraction of it. Other places in Holland, Amsterdam. So we can see and touch the Kuttanadu also. After around 4:30, we will be back. In 5-hour journey, we will cover around 50 kilometers. That's the main attraction of our Vega Cruise. Vega Cruise is totally under control of the Kerala State Water Transport Department. This is our department name. Then, so this. ഇവിടെയാണ് VIP ഗസ്റ്റുകളും ഫിനിഷിംഗ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജിങ് പാനലും കൂടെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡാണ് നമ്മൾ കണ്ട നെഹ്റു പവലിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ നെഹ്റു ട്രോഫി നടക്കുന്ന 1250 മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആ കാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ കയറുന്നത്. ആ സമയത്ത് പതിയെ ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഇറക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ആദ്യഘട്ടം നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ആദ്യഘട്ടമായ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ആ നെഹ്റു ട്രോഫിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ സന്ദർശകർ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ആലപ്പുഴ
तो हम लोग एक नया विज़िट करें, एक ये वाला लैंड का नाम है पादरा मरल। तो एक थोड़ी बहुत इसके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, तो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। मेरा पापा सब कुछ बोल रहे थे इसके बारे में, थोड़ा नाम भी है वैसे है बोला तो फिर अफकोर्सली देख रहे होगा आपको, और साथ साथ देखिए पब्लिक देख कितने लोग हैं, निकलते जा रहे हैं मगर कम ख़त्म ही नहीं हो रहा। और अंदर जाके फिर और एक बार देखेंगे, ठीक है। तो अभी बाहर निकल फॉरेस्ट। लाइक वेलकम करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, लाइक तोड़कर ऐसे डाले देख, चीफ गेस्ट की तरह। लाइक कितना बड़ा ह्यूज लाइन है यहाँ पे, दिख रहा ही होगा। कितने പേര് ഉണ്ടെന്ന്
കേരളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കേരളീയർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവർക്ക് ഒരു വലിയ നന്ദി പറയണ്ടേ. Come on, big clap for them.